Dear learners, model of operation research, that is the topic of our video. So, the basic purpose of modeling is to help decision maker to study the behavior of a system without interfering with as going operations. So, in this video, we are going to cover the following things. What is the meaning of model? Features of a good models, benefits and drawbacks of a model, on what principles you have to take into mind when modeling is there, how you can simplify the modeling or you can minimize the errors, then types of model used in operation research. So let's move further. What is model? So in this slide, you can see that model is the representation of the reality whatsoever we think in our mind or in the business that is based on the thinking process. So model is a general term which represent the abstraction of a real life system or a situation. The basic purpose of model is not to identify all aspects of the situation, but to identify significant factors and their interrelationships. अब मॉडल क्या चीज है? मॉडल आपकी रियल लाइफ सिचुएशन के रिगार्डिंग उसका एक रेप्लिका होता है जो आपको रियल लाइफ सिस्टम की तरह ही कुछ चीजों को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे कोई बंदा एक एरोप्लेन चलाना सीखना चाहता तो ये नहीं कि सबसे पहले उसे एरोप्लेन में बिठा दो, पहले वो एक रेप्लिका के ऊपर उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेगा। थोड़ी वो स्किल लेने के बाद उसको ऑपरेट कर सकता है। देन एक अच्छे मॉडल में क्या-क्या होना ज़रूरी है? मॉडल आपका सिंपल होना चाहिए, उसके ऊपर आप फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सको, उसको फ़ॉर्मूलेट कर सको। एक अच्छे मॉडल में कम से कम वेरिएबल होने चाहिए और जो आपका मॉडल है, वो ईज़ी टू कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। जैसे कार का डिज़ाइन होता है, तो उसके पहले डिज़ाइनिंग से पहले एक प्रोटोटाइप बनते हैं। जो भी एक डिज़ाइनर है, जो कार डिज़ाइन कर रहा है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जब वो प्रोडक्शन में जाए, तो वर्कर उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के कैपेबल हों। आपकी जो असम्पशन है रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडल शुड बी सिंपल और फ्यू होनी चाहिए। अब एक अच्छे मॉडल की क्या-क्या एडवांटेज हो सकती हैं? आपके जो मॉडल है वो हर चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, प्रॉब्लम को इन कंसाइज़ बड़े बारीकी से उसको कंसाइज़ करेगा। आपकी जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है वो लॉजिकली होनी चाहिए और सिस्टमैटिक इन नेचर होनी चाहिए। जब आप प्रॉब्लम को लॉजिकली अंडरस्टैंड करोगे तो उसमें आप फ्लॉज़ ढूँढ सकते हो, उसमें जो एरर है उनको मिनिमाइज़ कर सकते हो। मॉडल हेल्पफुल करता है न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नथिंग इज सर्टेन, देयर इज समथिंग ऑलवेज देयर टू इम्प्रूव। सो मॉडल ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द लिमिट्स, इंक्रीज द थिंग्स। आप सोच सकते हो आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जब एक सिंपल फीचर फोन होते थे, कोई सोचता कि वीडियो कॉल भी हो सकती है, लेकिन काश ये था कि हम दूसरे जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं उसका चेहरा भी देख सकें। बट एट प्रेजेंटली यू नो द थिंग्स आर डूइंग इन दिस वे। आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया इज देयर, सो दैट इज एडवांसमेंट ऑफ थिंग्स आर देयर। हाई पावर मैथमेटिकल टेक्निक्स वी कैन यूज्ड इन मॉडलिंग। देन एक डिसएडवांटेज की है। अब डिसएडवांटेज में क्या है? कोई भी चीज है एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। आपका मॉडल ऑलवेज रिलेटिव होगा, किसी न किसी चीज के साथ वो कंपेयर होगा। जो आपकी एक्सपेरिमेंट है उसकी वैलिडिटी को चेक करना जरूरी है। देन मॉडलिंग के प्रिंसिपल क्या है? पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज देयर, you have your model should be simple and it cover all the things in detail. Model is not a substitute for the decision maker, it is a tool to have a better decision.
Whenever you have to delete the things from the model, then that should be done very carefully. Model should be authenticated before doing into implementation. So modeling should have proper techniques to fit. A model can provide the things in a proper way, but how to go in detail, you have to keep your judgment in a proper way. Then how you can simplify your models. Whenever you have developing a model, you have to keep in mind two objectives. Number one, your model should be precise as possible. उसमें जो unnecessary details हैं उनको ignore करना चाहिए. It should be simple as possible in solving. उसकी simplify होना चाहिए वो. अब आप मॉडल को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो? आप उसमें देखो कि सबसे ज्यादा जरूरी वेरिएबल कौन सा है. अब कोई आपसे पूछे कि कार में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इंजन जरूरी है, टायर जरूरी है, या उसको ड्राइव करने के लिए स्टीयरिंग या ब्रेक जरूरी है? तो एवरीथिंग इज नेसेसरी, बट यू हैव टू मेक ए एनालिसिस व्हाट इज वाइटल and which part is essential. So you have to skip certain variable, aggregate the variable, altering the nature of variable. You can change the nature of variable. You have to make a relationship between various variables and changing the constraints accordingly. Now, there are four types of OR models: physical models, mathematical models, by nature of environment, and by the nature of generality. So when we are discussing a physical model, that iconic model and an analog model on the basis of nature of environment, deterministic model, and probabilistic model on the basis of generality, general models and specific model, and mathematical models or symbol models are there. You can classify the models on the basis of factors, on the basis of degree of abstraction, mathematical models and language models, on the basis of function, descriptive model and predictive models. Normative model is there on the basis of structure, physical model, analog, that is graphical models. Symbolic or mathematical model is there on the nature of environment, deterministic models and probabilistic models, and on the basis of time horizon, static model and dynamic models are there. So we are going to discuss the types of model on the basis of four parameters. One is physical models. So physical models include all the diagrams, graphs, charts, most of the things done in physical models, that is based on the designing of the problem and what type of problem you have to present in the things. Simply, for example, in a bar chart, you have to make a summary regarding monthly sale or other thing is there. So these models are easy to observe, easy to construct, easy to build. They are part and parcel of physical real system. So under this, first we are going to discuss iconic model. So iconic model represent the system as it, but it in different in size. In simple word, they are the images of the real system. These are called iconic models. Then thereafter analog models. So analog model is having all the features of iconic models, but they are the least abstract physical replica of a system. It is usually based on a smaller scale than the original. So, analog model is less used in case of management and commerce. That is widely used in case of engineering and sciences. For example, Indian Airlines, Air India, they are using flight simulators to train the pilots. So they are not the real replica of problem solutions. Then mathematical models or symbolic models are there. Mathematical model is a set of mathematical symbols or equation which represent the decision variable of system under the study. If we say in simple word, then mathematically equations, when they are related together and they represent some decision variables, then that is called mathematical models or symbolic model. For example, routing problem is q model is there, simulation, decision theory, Markov analysis. These are some example of symbolic or mathematical models. Then thereafter deterministic model.
That inventory control model is there. EQ is the best example of this. Under this deterministic model, everything is defined and the result is certain. If we give an input variable, then there shall be same output variable. जैसे आपने अगर आम का पेड़ लगाया तो उसके ऊपर बबूल नहीं लगेंगे, आम ही लगेंगे. That is deterministic model. Probabilistic model is something different from this. Probabilistic model is applied in case of risk and uncertainty. So your input and output variable take from the probability distribution. Just like game theory is there, that is the best example of probabilistic model. On the basis of generality, we can say general model for we can use everywhere, and specific model only for one particular situation. So at the end we can say that operation search model is a idealistic representation of the real life situations, which based on one or more aspects of the reality. um, Activity chart is there, PERT network break-even points. The base model objective is to provide a means of analyzing the behavior of the system and improving the performance. So I hope so. The models of operation search is clear to you. Thank you.